सलाम। बहन भाइयों, अंग्रेजी की बढ़ती हुई जरूरतों को देखकर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं या आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो बगैर इंग्लिश के ये संभव नहीं है। तो बहन भाइयों, देर किस बात की। Namaste and a very good morning to all of you. Good morning. I would like to say thanks to Global Spoken English for giving me an opportunity to hone my pronunciation skills. My name is Ujala and I belong to Manipurasna. I am learning English speaking from Global Spoken English. Today, I am going to deliver a speech on Republic Day. I want to start with some lines in Hindi. हमें एक नया भारत बनाना है, हमें एक नया भारत बनाना है, एक बदलाव लाना है और ज़रा कुछ नहीं करना, बस वो एक बदलाव पहले खुद में लाना है। I wish you all a very happy Republic Day. Happy Republic Day. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. So we are celebrating this day as Republic Day every year. In this year, 2023, we are celebrating the 74th Republic Day of India. The Constitution of India is the supreme law of India. Our Constitution is the largest written constitution in the whole world. Dr. Baba Sahib Ambedkar is the father of our Constitution. India is a democratic country which has no king or a queen to rule here. I live, the people here are rulers here. Every citizen living in this country has equal rights. No one can become chief minister or a prime minister. Without our vote, we have the right to choose our best prime minister or any other leader to lead the country in the right direction. I want to speak some heart-touching lines in Hindi. कहने का मन तो बहुत है, कहने का मन तो बहुत है, लेकिन शब्द कम पड़ जाएंगे। देश के लिए हजारों शहीद हुए और आगे भी होके जा रहे हैं। I end up my talk with a special thanks to you all wonderful people for listening to me with a great pleasure. Thank you so much and have a good day. सलाम। बहन भाइयों, अंग्रेजी की बढ़ती हुई जरूरतों को देखकर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छी नौकरी करना चाहते हैं या आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो बगैर इंग्लिश के ये संभव नहीं है। तो बहन भाइयों, देर किस बात की।